In this tech industry, finding new business is very difficult. Early success is not the right thing. You can discover yourself at any point in your life. कहते हैं when there is a strategy, even the amateur can make a kill. So which means teamwork is important, preparation is important, strategy is important. ये सब चीजें corporate world में बड़ी जरूरी हैं. Your mind is such a beautiful thing. इसे called neuroplasticity किसी भी age में हो सकता है. I'm 50 years old. I've grown up kids and I'm still thinking of re-evolving myself. Sometimes I want to become a software engineer. Too late for that. I can take this challenge, by the way. How is India working? Obviously, हर चीज में इंडिया हमसे दो हाथ आगे ही होता है, which is something. दो काम बता रही हो. अच्छा दो काम. They're about to lead the world. Can you believe this? I know a lot of Indians who are hiring Pakistanis. They now say Pakistan are hungry, affordable, and they have the attitude and they want to deliver a message. India once was at this stage. I don't see India as a source of competition. I would rather see them as a source of inspiration. You don't have to have an original idea. आपके ख्याल से easy पैसा original idea था पाकिस्तान में. Easy pizza was in Kenya. It's the execution which matters. किरियाने स्टोर वाले देख लें, वो इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं. You know, they're in the field. उनके पास कोई डिग्री नहीं है. उन्होंने MBA नहीं किया हुआ तो. I have a lot of respect for Kirana people. Without any knowledge, without any education, they're running a business for the last 30-40 years. And if you can add value to a Kirana store and you can convert that into 7-Eleven, Carrefour, Amazon, then that's where education comes in, your vision comes in. अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपकी MBA की डिग्री कागज का पुर्जा है. स्टीव जॉब ड्रॉप आउट था और मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट था, बिल गेट्स ड्रॉप आउट था. वो ड्रॉप आउट्स को नहीं हायर करते. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone watching Startup Pakistan. This is Aliza Afaq, your host for today. और आज जिस शख्सियत ने हमें हमारी पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया है, उनका तारुफ थोड़े से अल्फाजों में कराना थोड़ा मुश्किल है. So having more than 26 years of international working experience with renowned MNCs around the world, he's not just a corporate tycoon, but he's also a philanthropist जिनकी एक्सपीरियंस से और जिनकी जर्नी से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन की बात करें या मार्केटिंग और ट्रेंड्स की बात करें, there are a lot of big companies that come into our mind and he has been associated with one of the biggest tech giants around the globe. I'm talking about Samsung Pakistan and I have with us Mr. Umar Ghumman, the country head of Samsung Pakistan. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? Alhamdulillah, बिल्कुल ठीक ठाक. First of all, an inspiration sitting right in front of me. It's such an honor to be in discussion with you. That's very kind of you for these big words and Yeah, I don't know if I'm worthy of that, but yeah, Definitely. I'll take it with a lot of pride. So, इतना बड़ा लंबा tenure in the industry and then being associated with the technology industry and then becoming a household name in the corporate sector, story तो ज़रूर होगी. And journey के बारे में हम सब जानना चाहते हैं. So बड़ा interesting journey. Yeah, I started off my career 26 years back and I did my first MBA in December. This was the time when 26 years back when I was going through my convocation and started my job. 2nd Feb 1997 was my first day in the office in Orin McCann Erickson. Then I moved to another advertising agency and then I moved to Tetra Pak, worked there for 17 years, rose up the ranks from communication, environment executive, and then moving up to the food category and then headed the marketing department, then went abroad. Surprisingly, I worked in India for 2 months as an expat, proper expat. So Gurgaon, Tetra Pak India, worked on their strategy. And where I had found mentors for the likes of Umer Ghumman. His name is Ghumman as well. So he's a Harvard grad and his wife is a Harvard grad. I just met him in Boston in May last and he came and met me, drove for 50 minutes and came and met me for that. So I'll always be thankful to him for that. So I find mentors myself and I keep on getting guidance from those people. That's where I keep on reinventing and evolving myself. So moving forward, I came back, went to Egypt for a year on international assignment, responsible for Pakistan, Egypt and Turkey for a global project. Came back, executed that project in Pakistan and we won Asian CSR award for that from Malaysia, from Indonesia. And then moving forward, I started working on business development, worked there for 5 years, matured quite a lot of clients. That's where I learned the art of surviving with a lot of patience, because maturing a customer in B2B is a lot of work. Failures are inevitable and you need to stay afloat and you need to tell your bosses and the colleagues that you are still needed and you need to continue to mature a client, but at the same time
client is not there, but you're telling it's coming, it's coming. Yeah. So ये एक पेशेंस है. मैं आज एक्सपो सेंटर में भी किसी टेक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए गया हुआ था. वहाँ पे मैं बता रहा था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल gathered because in this tech industry finding new business is very difficult. So everyone sees things, you know, कि ये टेक जाइंट है, ये टेक जाइंट है. उन्होंने बहुत मार खाई होती है और बहुत फेलियर्स होते हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मैच्योर एंड डेवलप अ क्लाइंट. And I'll talk about another tech company founded by my brother, and we'll talk about that later, but let me just talk about my thing. And fast forward, my career was getting stale. I had some ups and downs in my career. I got demoted, and then I started working under a guy who I actually handed over the department, not having the best of the relationships. Turned out he was not a bad guy. I was thinking bad. So it's fair to accept. Yeah. It was time to accept, but it only happened when I went to LUMS, and there was a class, organizational behavior की Abdul Kareem साहब की class थी, and they said tell us a story of 5 minutes about your out of your professional career, and tell us the powerhouses. Did you find and identify the powerhouses in the organization? I realized that why I made a mess out of my career, because when I got promoted as head of marketing, I thought I was Mr. Know-all. I was the best guy there is. I was arrogant. I was young. I was only 31 years old, heading a marketing department of one of the largest organizations in food category in the world. And for Pakistan, it was a big thing for me. And I was more concerned about kitni badi gaadi hai, ye office corner wala chahiye. So I was not going for a thing which I was hired for. Rather, I was looking for all the shapeels around it. शशके जो आप समझें. तो अब ये सब चीज़ें जो हैं, they actually, जो घोड़ा जो होता है ना, उसका काम होता है मंजिल पे जाना. ये ट्रैक से उतर के ग्रीन घास खाने का नहीं होता. So I started eating that grass, and that's where I became arrogant. I digressed and I faltered. लोगों ने गलती देखी, उन्होंने कहा अच्छा अब तो शुरू में तो कुछ नहीं कहा. Then, you know, it turned out to be pretty bad. So I kept on thinking that these people were not fair to me, and I realized that I was a little early in the game. Early success is not the right thing. A lot of people, मैं patience की आपसे बात करना चाह रहा हूँ. अल्लाह ताला ने मुझे बड़े patience का तरीका सिखाया. मेरी शादी हुई और 6 साल के बाद बच्चे पैदा हुए. So I got my first lesson of patience. ठीक है, but the best part was you need to enjoy the journey, right? So I don't have to tell you, but myself and my wife kept on. हमने ड्राइव किया, हम एक जगह से दूसरी जगह निकलते थे. अब देखो ना, मेरी बेटी जो है यहाँ बैठ के सुन रही है इसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर. अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एडमिशन हो जाए और हम दोनों पार्टी करें और हम फिर रोड्स पे निकल जाएं. तो ये हमने करना. अच्छा, ये पेशेंस, LUMS, MBA, discovered myself over there, and you can discover yourself at any point in your life. And I discovered myself while giving a talk, and then I realized कि क्या होता है. Even then, fast forward, I graduate, I get a job at Samsung as a country head, and 3, 4, 5 years, this is my 7th year, I've been getting the top ratings there is in the local organization. And then eventually found out, my HR comes to me one day and कहा जी आप, she tossed a report on और हंसना शुरू हो गई. मैंने कहा लगता कोई बड़ा गरक हो गया. मैंने कहा जी फातिमा क्या चक्कर है? उन्होंने कहा पढ़ें तो सही रिपोर्ट. मैंने कहा पता नहीं क्या यार, कोई उल्टी 360 डिग्री रिपोर्ट आई. This was the 4th year in a row when I was getting the highest rating, and probably in MENA region as well. तो फिर उसके बाद दोबारा आई मेरे पास, उमर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया, टॉप 100 लीडर्स प्रोग्राम में सेल्फ 100 के अंदर हो गया. मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? मैंने कहा जी ग्लोबली जिसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है 360 डिग्री वैल्यूएशन, नॉट ओनली पाकिस्तान के, बाकी आपके बाकी कॉलीग्स जो काम कर रहे हैं दे ऑल्सो रेट यू. गुड फॉर मी. एंड इवेंचुअली पता चला कि उसने उस सेल्फ 100 प्रोग्राम में सिर्फ 60 लोगों को उन्होंने बीच में इकट्ठा किया. 60 लोगों में से मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया. They actually said, what happened? ये इतनी अच्छी रेटिंग क्यों आ रही है? And why you've been getting the top rating? And I realized I actually started working not for myself. I was not the arrogant guy anymore.
आई हैड बिकम मोर हम्बल, ग्राउंडेड, इसलिए कि मार बहुत पड़ गई थी. जब इंसान को मार पड़ जाती है तो इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाती है. तो जब आपको औकात समझ में आती है तो वह हम्बल हो जाते हैं. तो ये नहीं होता कि कोई हम्बल होता है, हम्बल अल्लाह ताला कर देते हैं इंसान को. एक्सपीरियंसेस बना देते हैं. एंड ओनली द रफ रोड्स मेक यू अ बेटर ड्राइवर. सो इट वाज वेरी बम्पी राइड, इमोशनली चार्जिंग. एंड देन आई रियलाइज कि लोगों की पहचान होना शुरू हो गई. देन आई रियलाइज कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ये कुर्सी जो है ये इसी की इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त नहीं है. सो आपको क्या करना है? आपको अपनी इज़्ज़त बनानी है. आपको इज़्ज़त कैसे मिल सकती है? पहले तो यह है कि आप किसी को उतनी तकलीफ़ दें जितनी आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, वी मैस विद पीपल, हम लोगों को तंग करते हैं. फिर जब वो आपको तंग करने पे आते हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता. इसी तरह ऑन द कॉन्ट्री इज़्ज़त की भी यही बात है. आप जितनी इज़्ज़त चाहते हैं उतनी इज़्ज़त दें. जितनी सिंसेरिटी चाहते हैं उतनी सिंसेरिटी लोगों को दें. जितना प्यार चाहते हैं उतना प्यार दें. एंड बिलीव मी, व्हेन यू आर ऑन अ हायर रैंक, व्हेन यू गिव इज़्ज़त, प्यार, सिंसेरिटी, एम्पैथी, people give you even more. And in the form of the feedback they give you, I don't ask for anything from myself mostly. First my people, then myself. उसका advantage ये होता है कि a lot of people started trusting me. अब ये सारा का सारा सिलसिला हो रहा है. And I go back to LUMS as a guest speaker. और वहाँ पे उन्होंने कहा जी LUMS से क्या सीखा? पहला सवाल, LUMS से क्या सीखा और उसका आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट आया? तो मैंने आई थॉट ऑफ समथिंग एंड आई केम. ओपन हाउस था वहाँ पे, तो मैंने बात की. तो मैंने सोचा कि यार देयर इज़ अ प्रोसेस. आप जो केस स्टडी मेथड है उसके अंदर वैक किसे कहते हैं, रिटन एनालिसिस ऑफ केस स्टडी. अच्छा, उसमें क्या हो रहा है? आपको कहते हैं पहले आपने मुशाहिदा करना है, एनालाइज, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स देख लें. व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, हल ढूंढ लिए. विच वन आई प्रेफर, मेरी मर्जी क्या है, मैं कौन से प्रेफर करता हूँ या करती हूँ. एंड देन व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, विच वन आई प्रेफर एंड व्हाई डू आई प्रेफर इट. एंड वी हैड टू टेल दिस स्टोरी in less than 30 seconds in the class. And if you are unable to capitalize on that 30-second story, somebody else will take the mic. When somebody else takes the mic, then means that your class participation goes away. So you need to prepare yourself for that 30-second window. That's where you are able to first work a lot hard. 8-10 घंटे आप पढ़ के जाते हैं क्लास से पहले, और जब आप 30 सेकंड की विंडो मिलती है तो अगली 30 सेकंड की विंडो मिलती है, फिर अगली की मिलती है. यही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है. इट इज़ नॉट लव एट फर्स्ट साइट, इट इज़ नॉट एलिवेटर पिच. आई कॉल इट अ 30-second window, and 30-second window gives you another 30-second window. You need to prepare for that. And this is my book, by the way. I'm working on that book for the audiences. Yeah. Okay. So I think it would be an added pressure, no? क्योंकि कुछ लोगों को anxiety का मसला होता है, कुछ लोगों से नहीं बोला जाता, तो it's a long process. 30-second window is a difficult process to achieve. I'm not asking anyone to fit themselves in a 30-second window. What I'm saying is, अगर आपने over prepared हैं, फिर आपको 30 सेकंड गिनने की जरूरत नहीं है. आप खुद ही फिट इन हो जाएंगे 30 सेकंड में. You'll start with a very confident outlook. You will look eye to eye and you say कि अगर कोई बंदा बीच में कह रहा है, let me just finish my argument. इसलिए you have an argument. And that 30 second will buy you another 30 second. So I'm saying, if you have a bumpy start, then what would happen? People will not give you a second chance. Chances do come. मैंने कहा तकरीबन 4000 के करीब 30 सेकंड विंडो पूरे दिन में होती हैं. आपने ढूंढने आपकी कौन सी वाली है. स्पोर्ट्समैन के लिए भी होती है. प्रेडिटर्स एंड एनिमल वर्ल्ड भी 30 सेकंड, चीता फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, लेकिन वो 30 सेकंड में नहीं पकड़ता अपना प्रे, वो भाग जाता है. आपने क्या करना है? सो आर यू अ चीता और नॉट. एंड चीता भी बड़े दिन भूखा रहता है, ठीक है. लायन भी बड़े दिन भूखा रहता है. सो कहते हैं व्हेन देयर इज अ स्ट्रैटेजी, even the amateur can make a kill, and this is what happens. So छोटे छोटे कब्स होते हैं ना, वो भी किल कर लेते हैं. अब वो स्ट्रेटेजाइज करके आते हैं कि यार 4-5 घेरेंगे, एक से आपने करना है. So which means teamwork is important, preparation is important, strategy is important. ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी ज़रूरी हैं.
प्रिपरेशन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. If you're not prepared, I have a Monday meeting in the office. Imagine 26 years in the company, in the corporate world. Still, I have to prepare for hours. I prepare for the whole week to speak for 5 minutes in the Monday morning meeting because I have to give an impression. Secondly, my business is the biggest. Expectations are higher. Right. And I get 5 minutes. In 5 minutes में भी पहले 30 सेकंड में बताना होता है कि मैं अगले 5 मिनट में क्या बोलने वाला हूँ ताकि आपने अटेंशन कैप्चर करनी थी. This holds true for everyone in any field. Are you, even if you're a doctor or a dentist or you are a lawyer or you are a business corporate, whoever you are, आपको अपना पहला इंप्रेशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है. एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है. जब प्रिपरेशन होगी ना सब कुछ सही हो जाएगा. अच्छा, मोस्टली ये होता है कि एंजाइटी बेशक शायद इस वजह से भी होती है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस आवर थॉट्स इन द वे. से जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ ये होता है कि आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माय हेड एंड ऑल ऑफ देम आर राइट टू द टारगेट, बट स्टिल आई जस्ट डू नॉट गेट like the way to just say it in 30 seconds, and that just gives that added anxiety. And you're not the only one. I have been like this whole my life. MBAs में, but मेरे पास मैं एक चीज़ करता था कि you need to be thick-skinned and you need to have a mindset. So I had to change my mindset. So I was not confident, and I used to say, Mr. Confidence जा रहा है. So I just, this is what we call fake it till you become it. So I kept on faking कि मैं confident हूँ. Can you believe this? मेरा नाम ही Mr. Confidence पड़ गया मेरी पहले MBA क्लास में, और मेरी जो ईयरबुक थी उसके अंदर भी लिखा है Mr. Confident. So, and I kept on branding myself as Mr. Confident, whereas I was not. And eventually I realized कि the same university, आज कॉन्वोकेशन में उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था एज ए VIP गेस्ट. उसकी रीज़न क्या है? I kept on projecting myself as a confident person and eventually become one. So मैं नहीं समझता कि कोई confidence and public speaking is an acquired skill. Anything that you do is an acquired skill. So आपको हर चीज़ सीखने का मौका सीखें. और मैं सबसे ही कहता हूँ कि सीखें, सब बच्चे सीखें, मेहनत करें, होमवर्क करें, सोच के जाएं. Your mind is such a beautiful thing. इसे called neuroplasticity. किसी भी एज में हो सकते हैं. I'm 50 years old. I've grown up kids and I'm still thinking of re-evolving myself and adding another 20 years from conventional knowledge into this Practical. beautiful unfolding tech world. And why not? Sometimes I want to become a software engineer. Too late for that. But never. I can take this challenge, by the way. Not challenging, but it's such an inspirational thing to listen to. But then again, so we talk about like the corporate world, and then you say कि your own journey when you got into it and the shashke and everything, आप resist नहीं कर पाते ना. And that's the thing जो हमारी youth भी काफी stubborn है इन चीजों में लेके. When you get to a certain point, it's hard. So I think what you said, people should adapt and adopt that to be there. So you talked about India. So the market, you've been there and now you're here in Pakistan. So is there like a difference in the market when it comes to tech innovation? How is India working? Obviously हर चीज में India हमसे दो हाथ आगे ही होता है, which is something. दो काम बता रही हैं. अच्छा, दो काम. They're about to lead the world, so मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं. So like it would have been a great thing for you to be there, connect with people, but what's the difference in the landscape in tech and innovation? देखें, ये जो मैं आपको अभी मेरी जो 30 सेकंड विंडो वाली मैंने आपको बात की थी, it 30 सेकंड के लिए 10-12 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है. इंडिया स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इटसेल्फ decades back. So can you believe this? I know a lot of Indians who are hiring Pakistanis because they now say Pakistan are hungry, affordable, and they have the attitude and they want to deliver a message. I have personal friends, Indians, who are hiring Pakistanis and who are getting services from Pakistan once it is affordable for them, because they say the currency differentiation, this is a merit for us. India once was at this stage where everyone and anyone could afford Indians. Now people can afford Pakistanis. I think I don't see India as a source of competition. I would rather see them as a source of inspiration, and which means that this is not a political statement. I'm talking about tech and business world. Look where the businesses are going. If they can do that, can't we do that? एक ज़माने में बड़ी बातें करते थे, वो जी गोरा होता है. एटलीस्ट उन्होंने वो तो तोड़ दिया. हमारे डॉक्टर्स ने ये तोड़ा है सारा का सारा. जो आपके टैबू था, आपके दिमाग, आप यू कुड नॉट गेट आउट योर शैल कि जी हम आगे नहीं जा सकते.
If these people can go there and we can also go there, and we need to learn from them, and we need to multiply our, you know. I think mindset का भी काफी फर्क है. जैसे you're talking about कि India did that way before, but like हम तो अभी तक stuck हैं. There's an ego issue to mindset. जैसे अब हम किसी के नीचे भी नहीं रख सकते. And the fact that you're saying कि पाकिस्तानियों को वो काम उस पे hire कर रहे हैं, they're hiring people. So a lot of us we say कि you know हम undervalue कर रहे हैं अपने आप को, in a sense कि if we want to be there, ऐसे नहीं जाएंगे, हम खुद कुछ करके दिखाएंगे. तो इस तरह तो बैठे ही. I think this is a stereotypical thought. I don't necessarily agree with this कि जी हम ऐसे हैं वैसे हैं. देखें, बात ये है कि अगर आप ऐसे हैं तो there must be a reason why you're like this. Then you must be valuing yourself a lot more. And if you can afford to not work and then continue to live under the wings of your own ego, be my guest. मैं तो सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर कोई कौम मेहनत करके ऊपर आ सकती है तो आप भी आ सकते हैं. मुझे तो किसी भी किस्म का कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही इन पाकिस्तान ग्रोथ इन फ्यूचर. मुझे तो नज़र आ रहा है कि आज मैं टेक फेस्ट देख के आ रहा हूँ, मुझे तो नज़र आ रहा है कि वी आर ऑन द रनवे, वी आर जस्ट गेटिंग रेडी एंड लुक एट आवर फ्लाइट सून. पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट देयर. एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लोग कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो गया, ये वो इस तरह की बातें, आई डोंट एग्री विद दिस. मैं समझता हूँ कि ब्रेन ड्रेन कोई चीज़ नहीं होती. ब्रेन्स आर देयर टू बी एक्सप्लोर्ड एंड देन यू नीड टू गो फॉर अ बिगर मार्केट. You go for a bigger market and then you acquire the knowledge and business, bring it back to your own country, send dollars back home. कोई भी बंदा बाहर जाता है वो अगली 2 जनरेशन तक तो ये घर भी बनाता है, शादी भी अटेंड करने के लिए आता है, क्रॉस स्टिच के कपड़े भी खरीदता है, इंसिग्निया की चीज़ें भी खरीदता है. और वहाँ से लोग आते हैं 2-2, 3-3 महीने यहाँ से बैठ के जेवर खरीद के यहाँ से जाते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल कनेक्टेड विद देयर रूट्स. मैं नहीं समझता कि आप समझें कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है. जितने भी लोग हैं, देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान की यूथ है. 65% पीपल आर अंडर 30 years of age. They are bursting with energy. Let them go out. मैं कॉन्वोकेशन पे बैठा हुआ था और मुझे वो कह रहे, जी ये 5,000 अगर चले गए तो उनकी जगह. मैंने कहा अगले 5,000 6 महीने फिर तैयार हुए बैठे हुए, उसके अगले भी 5,000 बैठे हुए. आप सिर्फ 5,000 भेजने की बात करें. मैंने कहा आप 50,000 भी भेज देंगे ना, तब भी 50,000 बच्चा फिर रेडी बैठा होगा अगले को करने के लिए. So, which means if you want to do anything for this country, export knowledge, export services, export skills. If you can't do localization of the manufacturing at the moment, different parts in the government sector, no matter which government is, people are looking towards के localization होनी चाहिए, resources को use करना. Good. But at the same time, our best resource to export is our skill set. यहाँ से बैठ के करें, बाहर से बैठ के करें, कुछ भी करें, इस मुल्क को आप जैसे लोग चाहिए. आप जैसे लोगों को दुनिया एक्सप्लोर करनी है, आप जैसे लोगों को अपने मुल्क से कनेक्टेड रहना है. सो मैं नहीं समझता कि आपका पेट्रियोटिज्म कम होता है. आप अमेरिका में बैठ के लोगों को देख लें, वो आपसे ज़्यादा पेट्रियोटिक हैं. दे लव पाकिस्तान लॉट मोर, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं आपको ख्याल ही नहीं रहता, आपको पता ही नहीं है कितना कम टैक्स देते हैं. ठीक है, आप जितना आप लोग टैक्स देते ना पाकिस्तानी, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं आप लोगों को. आपको जब 50-55% बाहर के मुल्कों में टैक्स देना पड़ जाता है ना, जब वहाँ पे लोकल रेजिडेंट होते हैं, फिर आप कहते हैं वहाँ पे सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, ये वो है, सारा कुछ है. आप टैक्स देना शुरू करें, मुल्क वैसे ही चल पड़ेगा. एनीवेज, दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस, बट व्हाट आई वुड से इज़ आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आई एम वेरी होपफुल. द मोर आई टॉक अबाउट इट, मुझे तो ये यंग जनरेशन गोल्ड माइन लगती है. वी आर सिटिंग ऑन दिस गोल्ड माइन एंड आई एम नॉट सेइंग somebody has to do it. They are already doing it. You guys are already doing it. You guys are getting ready. इनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा, मैं आया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आई हैड अ वेरी गुड लाइफ, फैंसी लाइफ, ग्लैमरस, ट्रैवल, हार्वर्ड जा रहे हैं, लम्स पढ़ रहे हैं, इधर टॉक्स उधर टॉक्स, जहाज़ों में फिर रहे हैं, बिजनेस क्लास फिर रहे हैं. दिस इज़ ग्रेट, बट दिस इज़ जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट. द ह्यूज वर्ल्ड इज़ वेटिंग समवेयर एल्स फॉर दीज पीपल. जो इधर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. लेकिन बाकी लोगों को और बहुत कुछ करना है. इसलिए मैं तो आई हाईली इनकरेज, एंड आई ऑल्सो इनकरेज दोज हू वांट टू कम टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बी माई गेस्ट.
Those who don't want to come or don't get the opportunity, there's a bigger opportunity waiting for you. But stay patient. Patience is the name of the game. और ये corporate world में बड़ी ज़रूरी होती है. 26 साल के बाद भी I have to take pills of patience, not in real way. Emotionally I have to think यार आज business target नीचे हो गया है. How do I motivate my team to do it? And I do motivational talks with my team on a regular basis and say, and it works. It works. Intangible results. Can you believe this? Uplifting the morale takes the business to the next level. And I Surely. think every business should be taking this approach because हम लोगों से यही सुनते हैं ना corporate world बहुत toxic है, corporate world में तो ना जाओ ये. But if like people like you, if they have mindset like that, then I think it shouldn't be the case. यार मुझे एक चीज़ बताइए, ये corporate world को एवं स्टिग्मा, मैं तो I am representative of corporate world. मुझे एक चीज़ बताइए, सास बहू को क्या मसला आपस में है? हर वो गिबत करती रहती हैं एक दूसरे की, और दो भाइयों की बीवियां भी आपस में गिबत कर रही थी. वो टॉक्सिक नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड टॉक्सिक हो गया. Maybe it's the kind of struggle you need to do. It's the patience you're talking about. Not everybody has that patience to have that sort of patience. No, everybody is. नहीं तो दुनिया कैसे चले? Corporate world बहुत अच्छी है. But it's going on a very faster pace. So maybe you need to get in line with that. ये देखें, you need to constantly evolve yourself. आपका फोकस अगर नॉलेज होगा ना, तो आपका फोकस ये नहीं होगा कि ये लड़की आज जो है बड़े वेस्टर्न ड्रेस में फिर रही है, दिस इज अगेंस्ट माई वैल्यूज. दिस इज हर वैल्यूज, दीज आर माई वैल्यूज. आपका एज अ जेंटलमैन और अ जेंटल लेडी, इट्स नॉट, आई जनरली से अटैक अ प्रॉब्लम नॉट अ पर्सन. ठीक है, attack an issue, not a person. And when you are making, there's a difference between being a joker and a humorous person. You know, आप कहते हैं one is funny and one is humorous. You know the difference? Yeah. The corporate humor क्या होता है? Corporate humor is not being sarcastic and putting someone down. You make fun of a situation. You make fun of this camera. You make fun of this mic. You cannot make fun of Eliza. Right? बहुत ही ख़राब टेक्नोलॉजी थी, इसलिए नहीं चल रही थी, और उमर घुमन को 45 मिनट वेट करना पड़ गया. ठीक है, फिर अलीज़ा भी चली गया, क्या कसूर है? ठीक है, सो विच मीन्स के टेक्नोलॉजी बुरी थी. ठीक है, अलीज़ा अच्छी थी. It's a very good way of putting that. Right? So why should I blame a person when the technology is there? So इसी तरह आप जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, टॉक्सिसिटी कब आती है? जब when you start judging people. और दूसरा ये कि देखें, जब आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अपनी एवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, एंड यू नीड टू हैव अ पर्पस ऑफ योर लाइफ. पर्पस ऑफ द लाइफ इज नॉट दैट नीटी ग्रीस घास, ये वही गाड़ी, कॉर्नर ऑफिस, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए. मैंने भी पहने हुए हैं, लेकिन बात ये मैं ये नहीं कह रहा ना पहनने चाहिए, बट इट शुड बी फॉर योर ओन हैप्पीनेस. आपको पता है कि जब व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, कोई मैं some laws of happiness पढ़ा था, उसमें था when you feel depressed, wear new clothes, you'll feel better. It's not for others. It works. This is, yeah, it works. It works. Go out. It works. अगर जिनकी औलाद है वो अपनी औलाद को जप्पी मारें, and I do it all the time. मेरा बेटा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं कहता हूँ ओए उल्लू के बट्टे इधर आ, जप्पी मार. ठीक है, जब वो जप्पी मारता है ना, तो मेरा आधा स्ट्रेस दूर हो जाता है. एंड वैसे बाय द वे, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ एंड व्हेन टू टेक स्ट्रेस. आई डोंट टेक स्ट्रेस एनी मोर, टू बी ऑनेस्ट. मेरा स्ट्रेस का एक एलिमेंट है, यूल बी, आपको हंसी आएगी सुन के, बता दूँ, पॉडकास्ट में डाल देंगे. मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, मैं आई डोंट टेक शुगर, आई टेक हनी, शहद. जो मेरी इतनी बड़ी जो बॉटल होती है शहद की, वो अगर आधी उसकी इन्वेंट्री रह जाए ना, तो सुबह मैं अपनी बेगम से कहता हूँ, मैं भर भर के शहद खाता हूँ. आई पुट इट इन दूध पत्ती एंड आई पुट इट इन ब्राउन ब्रेड, उसको डबो के खाता हूँ. तो मैं उसे कहता हूँ मेरा स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, ये शहद आधी बोतल क्यों हो गई, वेयर इज द बैकअप शहद? For me, that's the Nutella jar. Yeah. So this is a stressful thing for me, a lot of stress. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे नाश्ते में शहद कम, क्वार्टर पे आ गया तो समझे मैं स्ट्रेस में आ गया. तो दिस अ फनी स्ट्रेस, बट इट हैपेंस. मेरी बेगम का मेरा यही सारा चल रहा है कि यार इस आदमी को और कोई मसला नहीं है. सो आई डोंट टेक स्ट्रेस फॉर एनीथिंग, बट आई
आई एम फोकस्ड, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड भी हूँ, बट एट द सेम टाइम माई जॉब एट दिस लेवल इज not to manage work but people who are managing work. So I'm protecting their rights, I'm helping them out, I'm pulling the right strings. So I'm more like a general and commander of the army of the past. I have got archers, I've got javelin people, I've got foot soldiers, I've got other people as well, and my job is to use them at the right time. And secondly, I only hire people who are better than me. That's a big thing. And who can replace me. This is my first criteria to hire people. So अगर कोई कहे कि मैं अपने बॉस से बेहतर हूँ, मेरे बारे में कहे, तो मैं कहूँगा he's right. That's why I hired him. He's replicating your confidence actually. Yeah. So अगर वो मुझे कह भी देना, बॉस आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताऊँ. This is what I want to hear from my team. And I preach this all the time in my office. और मैं ऐसे कहता हूँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है? अभी कल मैं अपने एक सीनियर लड़के से बात कर, लम्स के बड़ा हुआ, मैंने कहा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है? You're better than me. Better deliver now. ठीक है? And not 1, 2, 3, 4, जो 4-5 लोग जो मैं रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट यही है. This makes my life easy. This gives me a lot of time to pull out myself out of the things, because I know कि यार competent लोग काम कर रहे हैं, and then I start looking around कि ये game of chess है, मैंने किसको कहाँ यूज़ करना है. At the same time मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये मुझे रिप्लेस कर लेगा. रिस्क तो अल्लाह ने देना है, डरने की क्या ज़रूरत है. I call it fearless leadership. And if I am able to develop this culture further in my organization or any other organization I work for, this will only help the organization and me as well, and that's where I don't take stress, and that's why मेरे बाल कम सफ़ेद होते हैं. Sure. So it's such a positive mindset. I think everybody needs to take a lesson from what you said and also need to start implementing this in their life to get to somewhere good. Absolutely. But then the kind of army you've talked about, the people you're developing, the people you're working with. So जिस तरह हम अगर अभी latest market trends की बात करें, innovation की बात करें, जिस तरह world is working and now the company you're working at, that's working, tech is working, so people play a great role in that. And in that sense, what do you think? एक तो आपकी internal, like the employees, they play a great role, but then again जो innovation आ रही है, customers are also another factor of it. And Samsung की हम बात करें तो you guys are working on AI now, this AI integration in your phones, and then we saw this Galaxy Ring coming up. So there's a lot of different things coming in the mobile industry that Samsung is kind of a pioneer for that. So how do you see that, and what do you think has influenced the people in the way? Yeah, देखिए this company does not stop inspiring me for the last 7 years. Every time when we launch a phone and then we think यार अब क्या आएगा, हम भी यही सोच रहे होते हैं. We're facing the wall. We're facing this wall. We're not facing this wall. They almost find an opportunity somewhere. मतलब I joined the company when S8 was launched. Bezel-less phone, H2H screen थी, बड़ा ज़बरदस्त, and it revolutionized the mobile industry. Everyone started following us. And I said, okay यार, we are working for R&D. What next? उसके बाद नोट तो चल ही रहा था, गैलेक्सी, कैमरा, स्क्रीन सब बेहतरीन है, मज़ा आ जाता है. वैसे आपस की बात है, इतने अच्छे ब्रांड के लिए काम करना बड़ा आसान होता है. Already doing a lot. या सो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब कस्टमर वैसे ही कहता है अच्छा परसेप्शन ये और रियलिटी भी है. कस्टमर को पता है अच्छा फ़ोन है, मेरे लिए सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी, अच्छी कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन, कस्टमर जर्नी को बेहतर करना. सो माई जॉब इज़ टू मैनेज एवरीथिंग विद राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग, प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दैट स्टफ. दिस इज़ माई रोल, बट दिस इज़ नेचुरली ईजी. I launch a phone worth 600K and I want launch a phone worth 28, 29,000. I have a customer for everything. And people trust. लाख से ऊपर के फ़ोन के ऊपर ना किसी 2 बड़ी कंपनियों के अलावा ना लोग 10 दफ़ा सोचते हैं. जेब से पैसे जा रहे हैं, सारी सी बात. हमने गाड़ी खरीदनी थी, मेरी बेगम कहती है कि मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जो हमेशा से हैं यहाँ पे. इन 2 के अलावा मैंने गाड़ी किसी और मुल्क की नहीं लेनी. समझ गई आप मेरी बात? तो वो कह रही है कि मैंने लेनी. एंड इट्स अ कस्टमर फीडबैक.
वो कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करके, करोड़ रुपया खर्च करके मैंने, मतलब अगर जापानी गाड़ी भी ना ली तो फिर मैंने क्या ली। तो ये सिलसिला है। एंड इसी वजह से इतने पैसे खर्च करके अगर आपने एक सही ब्रांड नहीं लिया तो फिर क्या लिया। आई गेस यू वांट टू टॉक अबाउट फ्लिप कैटेगरी एंड स्मार्टफोन्स एंड एआई के बारे में बात कर लें पहले। एआई, क्योंकि एआई की तो बात अभी यही, कभी इलॉन मस्क कुछ कर रहे होते हैं, कभी रोबोट्स की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में भी कुछ हो रहा है, तो वी आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन दैट। दिस इज ब्यूटीफुल। देखें बात यह है कि आप एआई में R&D कर ही नहीं रहे, लेकिन एआई को यूटिलाइज करने के काबिल तो हैं। आपकी यंग जनरेशन रेडी बैठी हुई है, बर्स्टिंग विद एनर्जी, आइडियाज़। अच्छा, मज़े की बात है आप बताओ, आप आइडियाज़, यू डोंट हैव टू हैव एन ओरिजिनल आइडिया। आपके ख्याल से इजी पैसा ओरिजिनल आइडिया था पाकिस्तान में, जिसने विच टुक द मोबाइल टेक ये इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म। इजी पिज़्ज़ा वाज इन केनिया, it was inspired from that in Pakistan and we became the pioneer. So you need, it's the execution which matters. Execution of the idea. It's not the idea per se itself. Anybody can have ideas. 10,000 ideas आ सकते हैं, लेकिन आपको execute कैसे करना है? So at go to market attitude, delivery, local launch plan, rolling out and enabling it, which means making it extremely convenient from the consumer journey perspective. Now coming back to AI. AI का दौर है, बिल्कुल है। I went to Harvard. I met one of my friends who works for Meta. And उसने और मेरा छोटा भाई who runs a company out of tech company out of Florida. We met in Boston. तो वो आया हमसे मिलने। We met in Dallas. वो आया Dallas में मिलने के लिए। We came from Boston to Dallas. And he said कि मेरे छोटे भाई को, वजी भाई अगर आपने अमेरिका में कारोबार करना है ना, तो एआई का तड़का लगा दीजिएगा। कैसी बात की? उन्होंने कहा यार हम कुछ कर रहे हैं। कहीं उमर भाई, वजी भाई जितनी जल्दी होता है ना कर लें। मेरे यंगर ब्रदर से वजी, she runs his own company out of Florida, back office in Pakistan, employing 200 people. And these people are supposedly very happy. And he's creating jobs. So brain drain क्या हुआ? One brain went out supporting 200 brains. Is it brain drain? It is a service to the country. जो मैं पहले बात की थी उसके साथ। अच्छा, AI, this was last year. AI का boom आता जा रहा है. Samsung being the most innovative company that I've come across in my career, rode the wave, came up with the Galaxy AI. Unthinkable. नवंबर तक मुझे भी नहीं पता था कि AI आना है। हम गए, हमने कोरिया में फ़ोन देखा, हमने कहा यार ये S23 और S24 में थोड़ा ही फ़र्क है। हमने कहा शायद हमारी तो जॉब है, हम तो माली हैं, हमने तो पानी देना है, तो हमारा तो काम बेचना है, हम बेच लेंगे, चलो कोई बात नहीं। वापस आए, एकदम हमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, वी वर ब्लोन अवे विद द फैक्ट, वाओ व्हाट अ फ़ोन। यार आप इमेजिन करें, आप ये तस्वीर, ये कैमरा देख रहे हैं, इस पर मैंने रख के सिर्फ यूँ सर्कल किया, वो स्ट्रेट अवे आपको सोनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैनन लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे यही वाला मॉडल स्ट्रेट अवे उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, ये कितने का बिक रहा है, कहाँ अमेजॉन पे, जो वेबसाइट से रिलेटेड होगी, द मोमेंट आपने अपना सर्कल क्लोज किया तब तक वो अपना काम कर चुका हुआ है। दैट्स वन थिंग। लाइव कॉल ट्रांसलेशन रिटर्न आ रही है किसी और लैंग्वेज में, आप दूसरे बंदे के पास S24 नहीं होना चाहिए, दूसरा बंदा वहाँ से बैठ के बात कर रहा है किसी और ज़ुबान में, उसकी ट्रांसलेशन आपको आपकी ज़ुबान में आ रही है, आप अपनी ज़ुबान में बोल रही हैं, आपके सामने टेक्स्ट लिखा जा रहा है, उसका नीचे टेक्स्ट, ताकि आपको पता चले कि मैंने बोला क्या, उसके नीचे एक और टेक्स्ट आ रहा है उस ज़ुबान का, और वो स्ट्रेट अवे उधर आपकी आवाज़ में या डिफरेंट आवाज़ में वहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। द अदर पर्सन इज लिसनिंग टू इट, कहते हैं वाओ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। एंड सैमसंग इज़ a very interesting company from that perspective. And I don't think it's going to stop over here. They're going to go places. They're going to make our life easier, add value to the life. And now I see, yeah, it has again surprised me. So why not to stay here for some more time? For sure. वैसे भी AI तो वैसे is
is on its boom and everybody is trying to integrate that in their lives. All the schools are not happy with that at all, not even universities, but they will be. But if we talk about competition per se, so competition ko log as a threat lete hain. A lot of people say, there's competition, we need to do something. But I think it should be taken as a motivating factor, given that if aap business mein hai kyun agar aapka competition nahi hai to. But at the same time, it's very easy to imitate technology these days. And given that, so there are a lot of other companies, a lot of other brands jo flip phone ही जिन्होंने launch किया, maybe in the flip category, and you guys have another flip phone as well. तो उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी imitate हो रही है? तो देखिए, बात है कि when you have a very strong execution and when you have created something in advance, the first mover advantage तो first mover advantage होता है. आपने 5 साल लगा के मेहनत करके चीज़ बनाई है, and somebody either getting inspired or copying, it's outside. Anyone can get inspired and do it. If they're good, they will take the share. If you're good, we'll take the share. Fortunately, we have the share. So you have the answer, right? And the second one, मैं आपको एक बार बताता हूँ. देखिए, I'll just use an analogy. Pete Sampras, when he was retiring, and his arch rival was Andre Agassi. He did not let Andre Agassi win much while he was there as a king of tennis. And he said, I have a huge respect for Andre because he pushed me to play my better tennis. Won mostly by Pete, not Agassi. He has a lot of respect for the competition. So if a competition, so I'll use this analogy for us. I'm not speaking on behalf of Samsung right now. I'm speaking as an employee. So if a competition is tougher, I'm sure Samsung will bounce back even bigger, in a bigger way. Let the competition come. We're not scared. While working for this great organization, we are not scared. We think that we will be always one up. And if we are not, we'll ramp up. So this is my confidence as a head of business over here. And this actually boosts my morals to a level that I think it's worth it to spend more time in this company. That's a nice way of putting that, and of course agreed. So technology में तो obviously बहुत कुछ चल रहा है, चलता भी रहेगा, आता भी रहेगा. And if you'd like to tell us what else should we be expecting from Samsung, or in terms of technology innovation, क्या आ रहा है और क्या आ सकता है, या any peek into what I can say, I am again not speaking on behalf of the top management, but I'm saying that this company will continue to evolve. Do R&D, surprise and add value to the lives of people. And I don't see it stopping anytime soon. So you can expect only progress and growth. Right. So let's go back to your life now once again. So you said you did your MBA twice, which is surprising क्योंकि हमसे एक भी नहीं होता, आपने 2 करनी है. तो क्यों? And what was the motivation and why? मेरे से भी दूसरा नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से. LUMS का था. LUMS का था. नहीं, उसमें वजह ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि MBA इंसान को करना ही एक्सपीरियंस के बाद चाहिए. I'm a huge fan of engineering. Okay. Huge fan of engineering. Because engineering is not about fixing machines. Engineering is about approaching a problem in a certain way. Yeah. Okay? I'm sure you would have engineers as your class fellows who would be giving hard time to you in MBA program. They're smart. They're trained to be smart. And because उनको data समझ में आता है, numbers समझ में आते हैं, उनकी problem solution approach बहुत कमाल है. And that's why I encourage, I've got nothing against undergrads, bachelor's programs, but I think one needs to, if given a chance in life, try to go for a technical degree. MBA you can do anytime in life. MBA is for engineers, doctors, and whatnot, right? MBA actually helps you summarize your thought process in a different way and approach the problem after you are geared up to do the analyticals, right? So, baat ye hai ki MBA with experience, you can always connect the dots if you have the experience. So, I'm highly surprised and impressed by you. You're choti si bachchi, and you are, you're sitting in front of
experienced khangad people like us and talking to us with a lot of confidence. So much so that I don't even feel that I'm talking to just kid from the college. You are mature. You because you're working. Now, after all these interactions, when you go out in the market, you'll be a very different, matured person. This is where I value the experience. Now, if you have the experience and if you do your MBA, your thought process would be different. And if you are inexperienced, it would be mostly bookish. True. You would only know what's written in the case study. In a great business school, what happens? They push your limits. They do not want you to speak about the case as it is what's written in the case. They do not want you to speak about what's written in the book. They want this book, case study, much together. Have your own opinion, 30-second window. 30-second window. Okay? So you need to express yourself, your own perspective. It gives you a reason to explore your own mind so when you have experience, you can always merge and come up with a better story. When you don't have the experience, you'll only use the case study and the chapter and then no knowledge. Nothing to relate to. So you can't relate to it. So I personally feel कि मुझे तो बड़ा मजा आया MBA करने के बाद, और I think that was a great decision. That was a turning point for my life. Yes, branding was strong. MBA, LUMS, Pakistan. आप दुनिया में आप कहीं हार्वर्ड में आपने कोई एक आध कोर्स भी किया हो. I talk about it and I learned a great deal at Harvard and it was amazing. So since we are all LUMS connections, we can talk good things about LUMS at the same time. मैं जब हार्वर्ड गया, I gave the closing remarks at the competing at the age of digital platforms at Harvard Business School. 26 मुल्कों से लोग आए हुए हैं, CEOs बैठे हुए हैं, and I was so comfortable, just like I'm talking to you. And I gave the closing remarks. It was not official closing remarks, but as such that the teacher said कि इसने बहुत ज़्यादा participate कर लिया है, but पिछले 1 घंटे से मैंने उसको टाइम नहीं दिया बोलने का, और वहाँ पे तो क्लास के तो थोड़ी एकदम बीच में घुस गए, तो मैंने उसके बैठे हुए हैं और अच्छा Umar, so what have your say in the last minute, kind of this thing. So I found the opportunity again 30 seconds. I closed it. I closed the course and as if I'm representing the whole class. It was good fun. I was trained by the LUMS class. So I was mentally prepared. I had gone through the course, my experience, what's written in the course, and what's written in the cases. And the writers of the books were conducting. Imagine David Yaffe, 26 years on Intel board, LinkedIn के ऑफिस से भी वो निकल के आ रहा है, मार्क ज़करबर्ग से वो अभी मिला हुआ है, ठीक है, ट्विटर के हेड को जानता है, लिंक्डइन के CEO को जानता है, इन सब को जानता है, उनसे मिलता है पर्सनली, वो आपको पढ़ा रहा है और वो उनके बारे में ऐसे बात कर रहा है. दीज पीपल आर द टॉम क्रूजेज ऑफ द एजुकेशन इंडस्ट्री, और उनके लिए ये हॉलीवुड कुछ भी नहीं है ये सब कुछ. And now these people are teaching you, not teaching you, they're the facilitators. LUMS में जैसे पढ़ा रहे हैं, teachers are not teachers, they are facilitators, they try to bring the best out of you. So that gave me a lot of confidence. So credit goes to LUMS for giving me that 2 years of beautiful experience. And I am making the most out of it, branding wise, learning wise, and from my own evolutionary perspective. Yeah. I think it's the kind of experience that, the university and the program is giving, that people who get out from there, they are a different thing in the market. So if I talk about MBA, आपने सही बात की है कि experience के साथ जाना चाहिए, because if you do not have the experience, तो आप क्या करेंगे? But then again, so I was sitting with my friends the other day and we were discussing this कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो MBA उनको पता भी नहीं होता MBA क्यों करने जा रहे हैं, and क्योंकि आपने MBA maybe you did it back then, and now the people who are doing, a lot of them, let me tell you, they're not coming from experience. They're sitting in the class and not coming from experience. But again, they were saying, आप एक क्योंकि MBA एक ऐसी डिग्री है कि जिसको आप करने के बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जा सकते हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. It goes both way. But then again, so they had this thought कि किराने स्टोर वाले देख लें, वो इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, they're in the field, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने MBA नहीं किया हुआ, तो मे बी शायद वो हमसे अच्छा बिजनेस रन करें. They have the knowledge that sadly a lot of MBAs don't have these days. So what do you have to say about that? I have to say a lot about that. Kiryane wale ki, I have a lot of respect for Kiryana people. Without any knowledge,
without any education, they're running a business for the last 30-40 years. ठीक है? They surely have the experience. You have the experience? No. You have the MBA? Yes. But suppose if you don't have the experience, but you know how to run the business, की books कैसे चलानी है, bookkeeping कैसे करनी है, सारा कुछ करना है. So if the Karyana has acquired a small store from his dad and is turned into Al-Fatehs of this world, ठीक है? So which means they applied their mind and they have hired educated people, by the way. ठीक है? बड़ी बड़ी कंपनियां पहले स्पाइस कंपनीज थी, ट्रेडिंग करते थे, इवेंचुअली वो टेक्नोलॉजी में आ गई, एंड सैमसंग इज वन ऑफ देम. बट दे स्टार्टेड एट अ नॉट अ वेरी बेसिक स्केल, बट इट वाज समथिंग एल्स एंड इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स. अगर करियाने वाले को आपसे ज़्यादा बिजनेस आता है, सो बी इट. करियाने वाले को अगर बिजनेस ग्रो करना आता है, बहुत अच्छी बात है. एंड इफ यू कैन एड वैल्यू टू अ करियाना स्टोर एंड यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू 7-Elevens, and if you can convert into Carrefours, and if you can convert into Amazon, then that's where your education comes in, your vision comes in, your skill set comes in. Nobody stops anyone कि जी आपने MBA किया है. ये मैं stereotypical thoughts जो है ना, ये हमें निकाल देने चाहिए. अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपकी MBA की डिग्री कागज़ का पुर्जा है, और अगर आप एक्शन करेंगे तो आपके करियाने का बिजनेस भी आपकी MBA की डिग्री से बड़ा है. इट्स द एग्जीक्यूशन विच मैटर्स, इट्स अ विजन दैट मैटर्स. उसके अंदर अपने टेक्निकल चीज़ें साथ बीच में आ रही हैं. अब देखें, कहते हैं स्टीव जॉब ड्रॉप आउट था, ठीक है? हमसे कुछ नहीं हो रहा था, हमारी फेवरेट स्टेटमेंट होती है. अच्छा बताते हैं ना, अभी आपको बताता हूँ मैं, अभी आपको तसल्ली कराता हूँ थोड़ी सी, ठीक है? स्टीव जॉब ड्रॉप आउट था, और मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट था, और बिल गेट्स ड्रॉप आउट था. आई डोंट नो, ड्रॉप आउट था मेरे ख्याल से. वो ड्रॉप आउट्स को नहीं हायर करते. उनकी कंपनी में तो सारे पढ़े लिखे लोग चाहिए उन्हें. देयर आइडिया वॉज बिगर देन द डिग्री. दे थॉट दे हैड समथिंग इन देयर हेड, बट दे कुड नॉट एग्जीक्यूट इट विदाउट द एजुकेटेड पीपल. मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग सेल्फ लर्न होंगे, कुछ लोग काम कर रहे होंगे. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, बट आई थिंक एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. अ लॉट ऑफ पीपल से, अच्छा हाउ मेनी ड्रॉप आउट्स हैव मेड इट टू अ डिसेंट लाइफ देन दोज हु हैव बीन एजुकेटेड. I have elevated my profile in my whole family. Whole my family is at a next level of whatever profile they were 20 years back, because हमें पता चला कि हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमें पढ़ाया. मैंने बड़ा क्लियर कट देखा है एक प्रोग्रेशन इन मैनी पीपल जिनके माँ बाप मेरे लेवल पे थे आज से 40 साल पहले. उनके बच्चे कहीं और हैं, वो मेरे से 5x 10x पे हैं. So I think this, you don't need to be a goddamn scientist to know it कि जी एजुकेशन का फ़ायदा है या नहीं है. भाई एम्पेरिकल एविडेंस उठा के देख लें. एजुकेटेड लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना पढ़ें? हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग अ साइड गिग? हु इज़ स्टॉपिंग यू टू डू दिस व्हाट यू आर डूइंग? एंड हु इज़ स्टॉपिंग यू कि आप MBA करें या ना करें? दिस इज़ योर चॉइस. If you want to add professionalism, if you want to have a very peculiar thought process involved in the evolution of your business and self-growth, मैं समझता हूँ उसमें एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है. अगर करियाने वाला ऊपर जाता है ना, मेरा कज़न है, उसने बड़ा बिजनेस किया, वो छोटे छोटे काम करता था जेवर का, and he became a billionaire. So he does not live in Pakistan, so don't come after me somewhere else. ठीक है? But the thing is, उसने क्या करता था, वो ना MBA की किताबें ले आता था, कहता था आज मैंने ना सोफ़ा बनाने वाली फैक्ट्री का पूरा MBA कर लिया है. सो ही वुड रीड बुक्स, ही वुड लुक एट द फाइनेंशियल, मैट्रिक पास, बट उसकी जो नॉलेज लेवल था वो मैट्रिक पास से बहुत ज़्यादा था. सो ही इज़ वेल सेटल्ड समवेयर विद लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, बट इन द हाइंडसाइट he was without a piece of paper as a degree, but he was educating himself as a business grad. उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी आती थी, उसको मार्केटिंग आती थी. ही इज़ रनिंग franchise businesses in other countries. So
अगर वो सेल्फ लर्नड MBA है, सो बी इट। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए पढ़ाई आपको एक ऐसे फ्रेमवर्क में डाल देती है कि आपको मरता क्या ना करता पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लम्स के बच्चों की जब शक्ल ऐसे नजर आती है ना, मुझे बड़ा मजा आता है। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं एक दफ़ा गया, हमारे साथ 4-5 लोग, जी हम एग्जीक्यूटिव MBA कर रहे हैं, हम इतनी मल्टीनेशनल नौकरियाँ कर रहे हैं, वी डोंट हैव टाइम सर, देखें ज़रा प्रेशर ज़्यादा है। ऐसी ही ट्राई मारने की कोशिश की थी। हमारे प्रोफेसर थे आरिफ राना, मैंने कहा सर वो बहुत ही सख्त स्केड्यूल है। देखें वो रेगुलर MBA बच्चे हैं, वो रहते ही कैंपस पे हैं, हम लोगों ने नौकरी करनी है, तो हमें हर एक तो वीकेंड पे क्लासेस, अगले वीकेंड पे काम कर रहे हैं, और ऑफिस में भी शाम को 4 बजे के बाद आप पढ़ना शुरू कर देते हैं कि आपने कोर्स कैसे से पूरे नहीं होते थे। आई हैव टू स्टडी एवरी डे टू बी एबल टू सर्वाइव। सो आई वॉज ऑलमोस्ट थिंकिंग कि आई एम गॉन। पहले 6 महीने मुश्किल होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जब उन्होंने सब आपको सख्ती मिल रही है, टीचर आपको टफ टाइम दे रहे हैं, सर क्या यार सर, वेरी गुड, आई विल अप्रिशिएट देम मोर। और जैसे पैर आगे ले गए थे वैसे ही वापस किए। उन्होंने कहा यार आप वापस जाते हैं, आरिफ राना साहब इस वक्त फुल मूड में आ चुके हैं, अब मजीद कहा तो वो जाके और टीचर से कहेंगे यार इनको और रगड़ा लगाओ। तो लेकिन इट वर्क्स, ठीक है ना। जूते पे पॉलिश करने के लिए सोना, लोहा, सोर्ड, ठीक है ना, सिंगल लेयर वाली सोर्ड नहीं चलती, मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट करना, मारना पड़ता है। what do they say, heating and beating? Multiple times. So if we talk about a memorable experience or your achievement in terms of your career, if there's anything you would like to share? Okay, I have a lot of milestones of failures and success. More failures, less success. But whatever success came in, it actually helped me to make more failures for the next 2 years, which means experimenting and all that stuff. So I tell my kids, fail big. ठीक है। तो मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में पढ़ा था, शुरू में मुश्किल था, तो मैंने आई टोल्ड हिम कि बेटा फेल बिग, एंड इफ़ यू फेल इन अ टॉप यूनिवर्सिटी इन द कंट्री आई विल बी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारा बाप तो उस यूनिवर्सिटी में घुस ही नहीं सका था उस वक्त, ठीक है। मेरे दोस्त वहाँ पहुँच गए, UETs and GIKs of this world. I could not get into those top universities. NUST for that matter. NUST उस वक्त नहीं एग्जिस्ट करता था इंजीनियरिंग में, मेरे ख्याल से। Anyways, मैंने कहा था कि तू वहाँ फेल होगा, I'll be proud of you and you give me a call. बाबा मैं फेल हो गया, मैं 12 घंटे में तेरे पास आऊँगा, मैं कहूँगा आजा बेटा चले पार्टी करते हैं, तुझे मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा टेनिस खेलने जाके। Wow. And as a result पास हो गए, ठीक है। The parents need to think like this so that absolutely support your kids. So I tell my daughter at the same time, fail but after trying. Failing without trying means you are a real failure, and failing after trying means you at least tried. This is a very interesting thing. This reminds me of a guy. I was in India, in Goa, और टेट्रा पैक एक इवेंट चल रहा था, तो एक गोरा था, देयर वाज अ डिनर एंड म्यूज़िक चल रहा है, और वहाँ पे तो मुझे कहता है लुक आई एम गोना गो एंड डांस विद दैट गर्ल। मैंने कहा ये इवेंट मैनेजमेंट वालों की मैनेजर है, तो उसको क्यों जाके, पागल हो गया तू? नहीं आई एम गोना गो। हम भी हंस पड़े, ठीक है जा वहाँ गया, लेकिन सॉरी I'm managing the event. I don't dance with the clients. तो वापस आया, मुझे कहता well, at least I tried. So this is what I meant to say, that at least he did not have any sort of thing in his mind that he did not try. So this also holds true for the world, practical world as well. You need to continue to try, and if you fail, you say, at least I tried, I failed. मेरी किस्मत में नहीं था। Fail 1000 times. मैं अक्सर कहता हूँ कि जी नौकरी मुझे कौन, कितनी बार अप्लाई किया? 2 जगह अप्लाई किया। 100 जगह अप्लाई करो ना, 100 दफ़ा फेल हो सकता है 101वीं बार आपको नौकरी मिलने वाली है। इसी तरह बिजनेस डेवलपमेंट में आपको बता रहा हूँ, 2 साल के बाद बिजनेस डेवलपमेंट
के बाद मुझे सक्सेस मिलती थी. माइलस्टोन्स ये हैं कि आई लॉन्च्ड मिल्क टीयर कैंपेन विच हमें बैक इन अर्ली 2005-06 के अंदर वो कार्टून सीरीज थी टेट्रा पैक में. माई सेल्फ एंड मिल्क टीयर कैंपेन आर सिनोनिमस बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम आइडिया जनरेशन अप टिल आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम सेफ गार्ड बैक देन. लेकिन मैंने अपनी कार्टून सीरीज निकाली एंड आई डू गिव क्रेडिट टू सेफ गार्ड फॉर दैट. एंड Tetra Pak had its own animation and it continued to go on for another 5, 6, 7 years. There used to be a TV show. TV show. I used to watch. Zain और फिजा वाली आप बच्चे yeah, होंगे. और पता है कि उसका पहला जो बच्चा था उसका नाम M से होना था, मेरे बेटे का नाम था. तो उसका हमने उसके केक के उसकी फर्स्ट बर्थडे जो है ही इज़ द फर्स्ट मिल्केटियर एक्चुअली. उसको हमने उसकी फर्स्ट बर्थडे जो है उसको मैंने मिल्केटियर बनाया हुआ था उसकी बर्थडे केक के पर. आई स्टिल हैव द फोटोग्राफ्स बिकॉज आई वॉज द डेयरी कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर. एनीवेज दैट वॉज एट 45-50% कन्वर्जन उसके तरफ से आनी शुरू हो गई. फिर उसके बाद आई लॉन्च्ड मोमो वाली कैंपेन. देन आई केप्ट ऑन इवॉल्विंग दोज कैंपेन्स. I got successful. Then I had a downfall. Then I went to LUMS. That was a milestone. Then I signed 5-6 customers with 2 years of gap each, right from pitching up till everything. And then in the end, graduating from executive MBA, then getting a job at Samsung, and then acing it every year. It is a zoo out there in the smartphone world. It is very, very tough out there. Competition is tough. It is just like Games of Thrones or Ertugrul series. I resolve one problem, the next one is waiting for you outside. मैं इस रूम से बाहर निकलूंगा तो एक और प्रॉब्लम, जैसे आपको तलवार लेके बंदा खड़ा. आप समझें यही है. इधर प्राइस आपने दी है, इधर प्रमोशन दी है, अगले दिन कंपटीशन. एक नहीं है, 7-8. And then you are fighting with all your tools and everything, and you cannot have a chink in your armor because the competition is going to take the advantage of that. That's good fun. That keeps you alive, active. Even at this age, I feel like being a teenager, and I have this kind of energy, which I feel it. So this is the kind of industry I'm in. Getting selected among 100 top leaders, a program. In that year, only 60 leaders were selected. My 5 to 7 minutes video is shown in the Samsung Leadership Center in the under conflict management category. For everyone who is doing a course, they have to view it. Thank you so much for giving us time and being on our podcast. I think लोगों को अपना mindset थोड़ा change करने की ज़रूरत है इस inspirational talk के बाद. तो I know कि मुझे ये नहीं सोचना कि will I be getting success or will I be failing. I just need to try, keep trying and try harder. And thank you so much once again. Anything you'd like to say for the closing remark? So don't be afraid of failure. One, fail big, and enjoy the journey. Right? That's one thing. So grit, determination, constant evolution, which would only happen with the education. Education does not mean that you need to get a degree, a must. Those who cannot get it, read those books. Those who are lucky enough to get into a degree program, utilize it. Secondly, try to get the technical degree or technical education. That is a must for our world, and explore this very interesting, unfolding digital world that is going to take you places. So you're not confined to the country you're living in. You are you are a free soul. Go fly high, enjoy your life, and make your living. And never ever think कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है. पाकिस्तान में बहुत कुछ है. पाकिस्तान में आप जैसे यंग लोग, यही सरमाया है. ये सरमाया एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, लोकली भी यूज़ होना चाहिए, यहाँ से बैठ के सर्विसेज बाहर की भी देनी चाहिए. आई एम सो एक्साइटेड टू सी द यंग पीपल टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइफ. आई फील यंग अगेन. सो इफ एट 50 I ever feel my corporate career ends, I think my new career as a digital nomad might start tomorrow. I'm not going to wait. So you guys inspire me. I don't inspire you. I see Pakistan is sitting on a gold mine. If you don't see it, that's your problem. I see it. I'm going to reach eventually. Thank you so much, Mr. Umar Ghumman. It was great. And I wish you all the very best of luck. And तीसरा MBA तो नहीं आ रहा. PhD आ सकती है. PhD आ सकती है. ठीक है.